Good evening, all of you. This is Dr Ruchi, shirudkar. Today I'm going to talk about importance and how we should take a case history of an autistic child or the child who's on spectrum or suffering from ADHD. As you all know that I'm very actively working on such cases, autism, behavioral problems, ADHD, Asperger's syndrome, developmental delays. So in my experience, I've realized that a well taken case is half the battle won. So आपने जितना अच्छा केस लिया, और केस ये जो केसेस होते हैं ये नॉर्मल केस टेकिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है, right, when you're treating a child on spectrum. So I'm going to discuss the key points that you have to understand in such cases. So the first point is start from the pregnancy history. Start even before that. Start ki whether the child was planned or not planned, whether the parents wanted the child, whether the child was wanted or not wanted, whether there was some pressure that they should have a second child, or a boy child or a male child. So all that that goes before they conceive, that because everything is important, right? Any medical history, any illness that the mother has or the father has during the time of conception. Okay, first point. Second, the mental state during pregnancy. I'm going to tell you more than 80% of cases are treated with the pregnancy history. This is my experience, that most of the cases have a troubled pregnancy, a lot of stress. There can be abuse, there can be physical abuse, or the mother may feel neglected, the mother wants to be pampered, or the mother feels very homesick. One most common thing that I have seen in such cases, that the mother develops a fear. She keeps on reading something and she fears कि बच्चा normal होगा कि नहीं, बच्चे को कोई problem तो नहीं हो जाएगी. I have seen mothers who have typical fixed ideas कि recently I had a case जब किसी पंडित ने बोल दिया आपका दूसरा बच्चा होगा तो आपका पहले बच्चे को health issues आएंगे, और वो fixed idea mother ने दिमाग में it kept running. Yeah, I have cases where द मदर फेल्ट कि मेरे बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं होगा, मेरे बच्चे को कोई नॉर्मल तो पैदा होगा ना, कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी या कोई मेंटल डिजीज तो नहीं हो जाएगी. सो लॉट ऑफ एंजाइटी. इन सच केसेस यू थिंक ऑफ एकोनाइट, fear that the child will get deformed, no matter what the presentation you have of the child. So pregnancy history is very very important. See कोई abuse है क्या, कोई insecurities हैं क्या, financial insecurity थी, I used to feel alone, my husband was not there, or my in-laws tortured me, I was tormented, I felt very I used to cry alone. Yeah, whatever, the pregnancy history is very 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 important. I cannot talk enough about the pregnancy history, because अगर आप कितना भी अच्छा केस लें और अपने प्रेगनेंसी हिस्ट्री नहीं ली, यू मे मिस द टोटलिटी. एंड लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी हिस्ट्री कैसे. सो वॉट एवर इज़ द फीलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम्स इन द टोटलिटी. जो भी आप टोटलिटी बनाएंगे, एनालिसिस एवेल्युएशन करेंगे, प्रेगनेंसी हिस्ट्री वुड कम हायर. फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट निगलेक्टेड, सो आई राइट ailments from being neglected or delusion neglected, or I felt homesick, so I may write ailments from homesickness. I wanted to go to my maiden place, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी. इन सच केसेस थिंक ऑफ कैप्सिकम एज अ रेमेडी. Again, I would say कि no matter what is the child's presentation, the child can be mild, the child can be aggressive, कुछ भी. ऑटिस्टिक केसेस यू डू नॉट प्रिस्क्राइब ऑन एक्सप्रेशंस. यू डू नॉट सी कि अच्छा चाइल्ड में बाइटिंग है, चाइल्ड टो वॉकिंग कर रहा है, या इनडिफरेंस टू सराउंडिंग है. वो तो सब कॉमन सिम्टम्स हैं. यू डू नॉट प्रिस्क्राइब ऑन द कॉमन सिम्टम्स. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़, हम लोग बहुत अच्छे से केस लेते हैं और हम सारे एक्सप्रेशंस की टोटलिटी बनाते हैं, right? Indifference to surrounding, we take autism as a rubric, or we take play desire to play alone. ऐसे rubrics लेते हैं जो common है autism को. So please don't give importance to such rubrics. Anything peculiar to the child. तो peculiar क्या, pregnancy history. फर्स्ट जो हमने बात करी, तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री, एनी डिजीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनी मेडिसिन्स टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनी अदर वैक्सीनेशन डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो एवरीथिंग अबाउट द प्रेगनेंसी you have to take in detail. Okay, so first is pre-pregnant state, whether the child was wanted. Second, a well understood pregnancy history.
पेरेंट्स बोलेंगे इतना कुछ नहीं, एक झगड़ा हो गया था, बट यू नो everything has to be taken into consideration, right? And then the third part, डिलीवरी कैसी थी, उसमें कुछ पेन इंड्यूसिंग मेडिसिन दिए थे, सी सेक्शन हुआ कि नॉर्मल हुआ, मेकोनियम पास हुआ, कॉर्ड अराउंड द नेक, सबकी रेमेडीज़ हैं. इन नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द रेमेडीज़ ऑल्सो, बट इट्स नॉट दैट ईजी, यू नो, as simple as it seems. It's when we treat an autistic case, you have to join the, I always say it's about joining the dots, the correct dots, you know, कि ये है ये है ये है. अगर वो आप करेक्ट डॉट्स ज्वाइन करके एक एग्जैक्ट रेमेडी पे आते हैं, यू विल हैव वंडरफुल रिजल्ट्स. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, और this is not only for homeopathic doctors, I also request parents, because this is my experience, if you start early, if you see the early signs of, you may not like to label your child as autistic or ADHD, it's completely fine, because lots of parents live in denial कि यार मेरे बच्चे को तो नहीं हो सकता ऑटिज़म, या ये तो नहीं है, ये बस थोड़ा हाइपर एक्टिव है, पर सिर्फ बोलना लेट सीख रहा है. Pick early signs. Even the patients who come normally to your clinic, if you pick up the early signs, treat early. The earlier the treatment, the better the results. जो मेरे पास बच्चे 1.5 से 3 साल में आते हैं या 3.5 साल में आते हैं, वो 100% क्योर होते हैं. When I say 100%, I mean 100%. I have documented data of children who are 100% out of autism or ADHD. They go to normal school. Right? So pick early signs. That is very important. So third part that I was telling you about is any diseases, you know, how was the breastfeeding, whether the mother was available. मदर ने 40 डेज़ के बाद ही वर्क ज्वाइन कर लिया, द चाइल्ड वॉज इन द क्रैश और विद द बेबी सिटर. ऑल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. हाउ वॉज द इमोशनल स्टेट इन डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज़ द मदर फीलिंग, वॉट आर द कंडीशंस ऑफ द हाउस. So all this is very important. And then next comes that when the parents start picking up the early signs कि वो toe walk कर रहा है, या वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, या फिर वो एक ही चीज़ बार बार कर रहा है, या स्पीच डेवलप नहीं हो रही, या बहुत हाइपर एक्टिव है, द चाइल्ड इज़ नॉट सिटिंग. The next important point is screen time. I have seen child who is normal, but parents ने कोविड में 8 to 10 hours of screen time दिया. पेरेंट्स, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्रीज है, मैं पेरेंट्स सेड कि हम 8 घंटे बच्चे को स्क्रीन दिखाते थे, या वो टीवी के आगे बैठा रहता था, एंड देन द चाइल्ड स्टॉप्ड, यू नो, ग्रोइंग, और उसके जो इमोशनल ग्रोथ है या सोशल अडेप्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई. So screen time, the first thing that you have to do as a physician is zero screen time, zero, absolute zero screen time, right? तो पर आपको हिस्ट्री में लेना है कि स्क्रीन टाइम कितना था, कब से उन्होंने अर्ली साइंस पकड़ना शुरू किया, कब से पेरेंट्स को समझा कि ओके देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल, देयर इज समथिंग दैट नीड्स एन अटेंशन, राइट? वो सारे. फिर माइलस्टोन्स लीजिए, वॉकिंग, टॉकिंग तो बहुत बार डिलेड ही रहती है. टॉकिंग आप नहीं लेंगे, डिलेड स्पीच आप टोटलिटी में नहीं लेंगे, बिकॉज इट इज़ पार्ट. बट सम पेशेंट्स विल हैव एसोसिएटेड माइलस्टोन डिलेड, और अदर चिल्ड्रन में नॉट हैव एसोसिएटेड माइलस्टोन्स डिले. सो दैट वुड बिकम पेक्यूलियर कि बाकी सब माइलस्टोन्स भी डिलेड थे, वॉकिंग डिलेड है, टीदिंग डिलेड है, या फिर नहीं डिलेड है, वॉट एवर इट इज़. Fourth point is that physicals are very, very important in such cases. So craving, aversion, position of the sleep, चाइल्ड डर के उठता है क्या, स्टार्टलिंग है क्या, अगर बच्चे को स्पीच है तो कुछ ड्रीम्स हैं क्या, पर्सपिरेशन कितना आता है, इज देयर एनी स्मेल, स्टूल्स, यूरिन, एवरीथिंग, वेदर द चाइल्ड इज टॉयलेट ट्रेन्ड और नॉट टॉयलेट ट्रेन्ड. एंड द लास्ट पार्ट इज़ एक्सप्रेशंस, कि बच्चा ऑटिज़म के साथ विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है कि विदाउट. मतलब बच्चा ऑटिस्टिक है पर कोई बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है, मतलब वो दूसरे को मारता नहीं है, काटता नहीं है, धक्का नहीं देता. फिर 6th पॉइंट है कि बच्चे को, बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को विद कन्वल्जन्स रहता है, तो दे आर डिफरेंट सेट ऑफ रेमेडीज दैट कम्स लाइक बुफो, जिंकम मेटालिकम, जिंकम फॉस्फोरिकम, where autism children have a history of convulsions, right? तो पूछिए कोई history of convulsions है क्या या नहीं है, whatever it is. And
जैसे मैंने बोला सारे फिजिकल्स लीजिए, फिर अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं तो क्या हैं, वो काटता है, पर ये सब जो बिहेवियरल इश्यूज हैं ये लोअर आएंगे. बट देर आर डिफरेंट रेमेडीज फॉर चिल्ड्रन हु आर माइल्ड एंड चिल्ड्रन हु आर अग्रेसिव, राइट. बट दिस वुड कम लोअर. कोई फियर है क्या, जैसे फियर ऑफ डॉग है या फियर ऑफ डार्क है. सो एवरीथिंग. सो आप पूरा केस बनाइए एंड देन कम्स एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो एक्सप्रेशंस के रूब्रिक्स हैं कि बाइटिंग है या आजू बाजू पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये लोअर लेंगे. तो सबसे ऊपर आएगा प्रेगनेंसी स्टेट, चाइल्ड वांटेड था नहीं, एंड फिजिकल्स, एंड लास्ट में आएगा एक्सप्रेशंस. इफ़ यू फॉलो दीज बेसिक रूल्स ऑफ taking an autistic child, I promise you will have very good results. I have told this earlier also that I have failed in numerous cases, and from last 2 to 3 years I can confidently say now that I am able to treat such cases. I am having good results because I have realized the hard way, and that is why I want to make the point. And I also want to make a point for all the parents who are facing difficulty. Start early treatment. Allopathic does not have anything much to offer. Homeopathic is the only treatment which we have good results. So consult a good homeopathic doctor. स्क्रीन टाइम ज़ीरो करिए, अर्ली साइंस पिक करिए, जल्दी दवाई शुरू करिए. डोंट पैनिक, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. बच्चे को अकेला खेल रहा है पूरे दिन, अपना टीवी देख रहा है, ऐसे मत करिए. जितना आप ओटी में डालिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ ऑल्सो वर्क, एंड यू ऑल्सो गेट इन्वॉल्व. उसको और बच्चों के साथ रखिए. थोड़ा स्पीच आप उसका इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. 1-to-1 प्ले करिए. ऐसे रैंडम खेल रहा है, अकेले छोड़ दिया है, वैसा आप मत करिए. एक बॉल आप फेंकिए, वो दूसरा. सो स्ट्रक्चर्ड प्ले में आप बच्चे को डालिए. लास्ट पार्ट इज डाइट. It is a proven fact that sugar and milk increases hyperactivity and such problems. So sugar bare minimum rakhiye. There is also gluten free, casein free diets where doctors have talked कि gluten और casein milk and sugar अगर आप reduce करें या zero करें, you can see such improvements. But in my experiences कि absolute zero करना कई बार parents के लिए difficult हो जाता है, but bare minimum तो definitely yes. Don't give a lot of sugar. I have seen children eating a lot of chocolates and sugar because it increases a lot of hyperactivity. So coming back to case taking, it is very important, and once a well taken, I also have a history form that I give to parents to write. So I have a preliminary information कि घर का structure कैसा है, शादी कहीं फैमिली में तो नहीं हुई है, इज़ देयर एनी अदर चाइल्ड इन द फैमिली हु इज़ ऑल्सो ऑटिस्टिक और हैज़ सम बिहेवियरल इशूज़. सो give a basic questionnaire to parents where they can fill and where the case is going. So sometimes parents write that the pregnancy was very troubled, there was a lot of financial stress, or we were having a lot of fights or quarrels and it was a difficult phase. So where to explore and how to explore. So if you get a preliminary information, it always works. Otherwise मतलब ये सब करने के बाद भी कई बार केस में हमें 40 minutes to 1 hour लग जाता है. So it's always give a structured history form to parents to write, so they know what kind of questions and what. अदरवाइज़ क्या होता है, पेरेंट्स भी कॉमन सिम्टम्स की बात करते रहते हैं कि ये ना आई कांटेक्ट नहीं करता है, ये बात नहीं कर रहा है, बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है. और हम एज अ फिजिशियन भी इन्हीं सब चीज़ों में अटक के कोई भी कॉमन रेमेडी जो हम स्ट्रेमोनियम, हाइसाइमस ऐसी कोई दवाई दे देते हैं विच मे नॉट फिट द टोटलिटी, राइट. So I'm not saying these remedies you cannot give, but if a well taken case, and किसको importance देनी है और कौन सी रेमेडी सोचनी है और कितना रिपीट करनी है. In my experience they need minimum repetition. Batch flower remedies you can give, study batch flower remedies, study remedies for hyperactivity, or children who are very aggressive and show temper tantrums. आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ बैच फ्लावर रेमेडी यूज़ करिए, यू विल हैव वंडरफुल रिजल्ट्स. यू कैन ऑल्सो यूज़ बायोकेमिक सॉल्ट्स विथ इन सच केसेस. एंड काउंसलिंग ऑल्सो वर्क्स बिकॉज आई हैव सीन कि नॉर्मली क्या होता है कि मदर बहुत फॉर होती है
बच्चे के लिए she wants to go through OT and give a speech therapy and consult a homeopathic doctor. But father, most of the cases, I'll not say every case, but most of the cases father feels, oh, this is not working, this is useless, and they end up fighting. It's not easy to bring up an autistic child or a child on spectrum. So there are a lot of quarrels or disputes in the house about finances. It's a costly affair. आप OT sessions करा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं. It can be draining for the family. So talk to the parents, explain your point of view, give assurance, and obviously not false assurance. You as a physician should know how much time it would take. So I had few cases from Bangalore, I have few cases from Mumbai who are completely out of it. So in start only I told them that it would require a year or two, and how much we can do it, right? So every case we may not give 100% cure, but we should try our level best to study more as as a doctor, as a homeopathic doctor. I would also request you all कि ऐसे केसेस को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ट्रीट कर पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, पेरेंट्स को क्या समझाना है, और स्टडी. This is very important. Nothing comes easy. You have to study a lot of books and a lot of literature about autism. You should know what autism is. Diagnostic Statistic Manual 4 जो बुक्स है, DSM-4, वो पढ़िए. कॉमन सिम्टम्स क्या हैं. Even adult ADHD आते हैं, या younger children, 7 years, 8 years, parents come and they say they don't understand social cues. You should know how to treat them. So hope this helps. Please take a बहुत अच्छा केस टेकिंग करिए ताकि आपको पता हो कि क्या हमें दवाई देनी है. And in the end, I would only say that please give importance to pregnancy history. Never forget to take a pregnancy history in such cases. So thank you very much. I hope you'll keep studying hard and give better results to your patient. Thank you.